Hello everyone and welcome to my channel, and this is the third and final part of Krishna's mixtape listening yours truly. तो आज 5 गाने हैं plus 2 skit है, VOTP skit 3 and it ends with skit 4. The songs that I'm going to be listening to: Talk My Shit / Guarantee. This has Yash Raj as feature. Then produced by Never Sober. Wow, what a name. Then we have Hello featuring a witch. She is an artist from Japan. And then we have Vibrate featuring Bacha. Who You Are featuring H. I hope that's how it's pronounced. And then the final outro track, which is called Yours Truly, which is the title track. And then we end with skit 4. So yes, this is going to be a longer reaction. Let's start from skit 3. Let's go. I think Krishna, he was to a great extent a lone ranger in many ways. In many ways, yeah. When he was coming with this style, which was not necessarily, endorsed anywhere, he had to try and fight and get that space. Yeah. In the mainstream, you don't just wake up and decide, oh yeah, I got the rhyme schemes. I'm the one who should be having that. Yeah. Listen, there's also a grind. You gotta grind. It's that simple. There's Don't be also envying grind. somebody's position. If you deserve it, go get it. Yeah. If you deserve it, go get it. Very important lesson. Very important. Like, this is just 27-second part from that particular podcast. But a very important lesson that has been said, that, you might feel that, yes, you deserve this, you deserve that. So it's not gonna come to you automatically. It's not just going to work. Universe is not going to be like, acha, you think you deserve it, chalo, theek hai, tumko platter mein de dete. That's not gonna happen. That is not gonna happen. You have to go and get it. Because if you know you have the skills, you have the talent, you know that you have the drive to do it, then what's stopping you? Good. So yeah, let's go into the songs. Why just let me talk my shit? जाऊं जिधर भागेगी इधर they don't walk like this. Why just let me talk my shit? मेरे speaker फटे भीतर तक they knock like shit. Okay, mic check. माहौल पूरा wavy, तू लगा ले life vest. Ain't another rapper, yeah, I might just. इनको कौन लगे best? It's me, that's my guess. Who's back? Boom bap, Wu-Tang, let that hook bang. Mood swings तेरे gang के है बहुत whack. पहुंच जाए तेरे सामने तो point blank. Dollar sign, ये start with that rupee sign, बहुत tax. Nice. 3 लाख 4 सबके बदले तेवर थोड़े पैसे गिन के यार. लड़के बेवड़े हो गए गिनने लग गए कितने बार. छोटी उंगली पकड़ ली उनकी छोड़ा रास्ते पार. Second hand गाड़ियाँ ये rappers करे flex. Second hand गाड़ियाँ ये rappers करे flex. जो करता shows reject are the ones that you get. I guess तुम और खुश के in the second hand check. मारा हमको थोड़ा टाइम है पर जान लेकी राइम नहीं कम. सोनू फॉर द सीन पर हम गाए तो फिर गाए निगम. बाय में जो Oh, that was so good. Come on. Yash Raj is so underrated and is so awesome. I like that Sonu Nigam wala entire line. That is so cool. I want to listen to it shows again. reject are the ones that you get. I guess तुम और खुश के in the second hand check. मारा हमको थोड़ा टाइम है पर जान लेकी राइम नहीं कम. सोनू फॉर द सीन पर हम गाए तो फिर गाए निगम. बाय में जो Awesome. चाय में हमारी वो तो चाय पिघल. I figured I am the one ना के I love that. गाने करे रिलीज पर ना हो रहे मिलियन. Shout out मेरे दोस्त rapping where we really from. दिल्ली से दिल्लीयान और मुंबई से विदियान. मैं पीता डॉम पेरियन, no Diddy Delion. 151 Ramotan got the belly on. सुनूं Machiavelli songs, Nelly मेरी Kelly कौन. कर ले तू श्रवण छूले चरण कर ले पैरी पॉन. Tell you what I want, what I really want. चाहिए रिचर्ड मिली वॉच, नो ड्रेक बट मिली वॉक. पटेक की घड़ी चौक में पहन के करूं जॉग. मैं घाट को बरगल लड़का छत पे There is so much in these bars, but we're going to discuss that after the song gets over. कुछ शॉट्स में. Why just let me talk my shit? जाऊं जिधर भागेगी इधर they don't walk like this. Why just let me talk my shit? मेरे स्पीकर फटते भीतर तक they knock like shit. You learned in the yard, दे दूं guarantee. मुझसे करते क्यों ये नफरत? What, there are like 2 songs? ये दिल रखा दलेर खून मेहनती. Rookie season MVP, why you mad at me? You learned in the yard, दे दूं guarantee. मुझसे करते क्यों ये नफरत? Why they mad at me? ये दिल रखा दलेर खून मेहनती. Rookie season MVP, why you mad at me? सबको चाहिए मेरा सॉस बेबी हार्ड लक. या लिरिक्स की ये लंगर लगी लड़के कर रहे पॉटलक. दारू बन गया बॉटल फिर खुल गया तो फिर बॉटम सब. बगावत मेरा हक छीनू तब है मेरा वक्त.
And I'm back on my bullshit. क्लब में मैं कुर्ते में full fit, माइक पे हूँ मुर्शिद. भाई मेरी भूल चूक माफ, मुझे हर साल ही करना था घोषित कि बेटा लीग ही अलग है, सीन ही अलग है. ये रैपर लगे स्वीट, ये तो चीनी अलग है. ये जो देश को बनाते वो हंसी की तरफ है, देश को चला रहे उनकी स्पीच है गजब है. कभी सुनना असली मजाक कौन सा चुनना, कला बन गया मसाला, कलाकार को ही भुनना. तभी song for the critics, crowd, पैसा, fame, only time. I'm What is this music? back my claims. ये लौंडे नहीं यार, दे दूं गारंटी. मुझसे करते क्यों ये नफरत, वादे mad at me. ये दिल रखा दलेर खून मेहनती, रूकी सीजन MVP. Why This you is mad at crazy. me? ये लौंडे नहीं यार, दे दूं गारंटी. मुझसे करते क्यों ये नफरत, वादे mad at me. ये दिल रखा दलेर खून मेहनती, रूकी सीजन MVP. Why you mad at me? डॉलर साइन करे ब्लेंड, बेटा 10 देता स्टाइल में, ये पेन लेता वेंडेटा स्टाइल. Okay, I'm dying at the production. This album's production is probably one of the best songs of the album. I'm like लेता telling माइक you. पे जब वैम Mixtape. देखा, चैन लेता सैम लेता गारंटी. मुझसे करते क्यों ये नफरत, वादे mad at me. ये दिल रखा दलेर खून मेहनती, रूकी सीजन MVP. Why you mad at me? डॉलर साइन करे ब्लेंड, बेटा 10 देता स्टाइल में, ये पेन लेता वेंडेटा स्टैंड लेता माइक पे जब वैम देखा, चैन लेता सैम लेता हाई पे और ग्राम पे ना कैमरे का डैम देता. भाई देखे मैंने भी दिन जब हिम्मत थी सहने की, बिन चक्कर के मेहनत की, दिन भर चलता है पेन. अभी ना सिंगर बनकर जेलसी मेरी, इनसे ना सहमति. इन वर्ड्स में गहरी लेगेसी, कला है मेरी थेरेपी. एक पैर सड़क पे, एक रहे नरक में, झांक के तू झलक ले या आंख से तू परख ले. आसमान से और सबर से ना मांग के और मदद से, जिस ताज के लिए तड़पते वो कांटे से कवर थे. हम ना कभी सेम मेरी नस्ल अलग, बदली मैंने आके गेम, मेरी हसल अलग. जिस जमीन से मैं आया मेरी फसल अलग, जो मेरे साइड मेरे भाई चाहे शक्ल अलग. ये लौंडे नहीं यार, दे दूं गारंटी. मुझसे करते क्यों ये नफरत, वादे mad at me. ये दिल रखा दलेर खून मेहनती, रूकी सीजन MVP. Why you mad at me? Fuck you, motherfuckers. Krishna the homie, yo. Oh my god. This is how we are starting this part 3. This is how we are starting with this song. Oh. I'm just gonna say it before I discuss a couple of bars which I really liked about this, but in this particular song, I'm just gonna say it right off the bat that out of all the songs that I've listened to in the mixtape, this is on top 3. Right now, this is number 1. Right now, this is number 1. This song, God, why is Yash Raj so underrated, man? Why? Like he deserves much more flowers and accolades. Like I know he's okay. When I say underrated, you know what I mean. I'm like he needs to be in the main leagues now, because I never used to listen to Yash Raj that regularly, but जब मैंने उनका last album EP mixtape जो बोलना है बोल लो, basically जब उनका last project मैंने सुना था, I was like, my mind was blown away. And after that, like I've literally after that project, I've like really become a fan of Yash Raj, and I was really sleeping on his talent. To be very honest, I was completely sleeping on this guy's talent. But this song, firstly, जो इनका producer है, क्या नाम है इनका? Never Sober. Like 2 different songs completely, but blended together so well. The theme is the same. Talk My Shit and Guarantee. The theme is the same. But how the mood completely changes in the first part and the second part, like first, I would consider it first half of the song and second half of the song, is just absolutely smooth. Execution wise, the way it's almost like a back and forth, because ऐसा नहीं है कि पूरा वर्स एक ने पूरे ने रैप किया है. हर एक वर्स में दोनों की आवाज है. Of course, in the Guarantee one, the second verse is by Krishna, but hook में दोनों गा रहे हैं और रैप कर रहे हैं, whatever you want to say. It's phenomenally executed. Wow, this has to be the best track so far for me in this particular mixtape for sure. And में आज तो मैं सारे सुन रही हूँ गाने, तो I would definitely give you my top 3. But अभी के लिए ये number 1 है guys. ये number 1 है. Okay. So before I talk about the song, somebody has to send me this. I don't know, आप मुझे Instagram में DM करो, कुछ तो करो. Apparently I am a meme, and
I feel so, I don't know, proud of myself that I made that blunder. जब मैं सीधे मौत के पैनकेक वाले में रिएक्शन दे रही थी, so there was a verse, right? शर्मा और नेगी. So I don't know why I completely missed it in my head that these are the surnames of ABJ and Kam, and I was, because मैं completely एक दूसरे जोन पे चली गई कि is this a cricket bar? तो मैं रोहित शर्मा और पवन नेगी, I was thinking of these names, and apparently that has become a meme now. And I want to know, कोई तो मुझे भेजो guys, कोई मुझे भेजो, कहीं तो इसी वीडियो में लिंक कर दो वो, अगर YouTube में है तो. But I want to see, and this has never happened to me. I've never become a meme. So अगर मैं DHH या IHH में अगर मैं meme material बन गई हूँ तो yes, thank you so much guys for doing that. जिसने भी वो edit बनाया होगा, thank you, big shout out to you. Anyway, now let's come back to this particular song. मेरे को चेयर थोड़ा खींचना पड़ेगा सामने. I don't know, I hope the focus is still there, because otherwise the laptop was a little far away from me. So I don't know if I should just talk about the bars, or maybe I should just because the song is so good, let me just listen to it again, and I'm gonna pause and then we can talk about the bars that I really liked and the bars which I did not get. या फिर आज भी कोई मीम बन जाएगा. हाँ, क्या लगता है आपको? So yeah, they're gonna talk their shit. Okay, mic check. माहौल पूरा wavy, तू लगा ले life vest. Kill another rapper, yeah, I might just. I like how the life vest thing is applicable for both, because वो बोल रहे माहौल पूरा wavy, because you need a life vest when you are going in the ocean or any, water front basically, to protect yourself. But you need a vest if there is a oncoming threat of somebody shooting at you. So I like how mahal pura baby tu laga le life vest, kill another rapper. Yeah, I might just. Tinko kaun lage best, it's me, that's my guess. Who's back? Boom bap, Wu-Tang, let that hook bang. I'm guessing Wu-Tang is probably an artist. अब मैं कुछ उससे ज़्यादा guess नहीं करूँगी. But I'm guessing another artist probably in hip hop genre. But I don't know who that is. Mood swings तेरे gang के है बहुत whack. पहुंच जाए तेरे सामने तो point blank. Oh, Move get best, it's me, that's my guess. I like that. Back, boom bap, Wu-Tang, let that hook bang. Mood swings तेरे gang के है बहुत whack. पहुंच जाए ये जो पीछे चल रहा है ना, ब्रा, ये I like these little additions in this song as well. तेरे सामने तो point blank. $sign, you start with that rupee sign, बहुत tax. I like this $sign Yashraj with that rupee sign, बहुत tax. 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 सबके बदले तेवर थोड़े पैसे गिन के यार लड़के बेवड़े हो गए. Now this is what I love about Yashraj, is his cadence is just so, I don't know, it's very fun loving. It's very, very fun loving, and he has this style where, वो खिल्ली नहीं उड़ाना बोलूँगी मैं, but it's like थोड़ा सा वो sarcasm वाला जो एक टोन है ना, मुझे वो हमेशा उनके cadence में लगता है, which I like. It's one of his things, one of the things that distinguishes him. गिनने लग गए कितने बार छोटी उंगली पकड़ ली उनकी छोड़ा रास्ते पार. Second hand गाड़ियाँ ये rappers करे flex. Second hand गाड़ियाँ ये rappers करे flex. जो करता shows reject are the ones that you get. I was just like this is तो completely like, मतलब अगले की खिल्ली उड़ाना, कि ये इनके पास सेकंड हैंड गाड़ियाँ है, लग्जरी कार्स प्रॉब्ली है, बट सेकंड हैंड है और उसको फ्लेक्स कर रहे हैं. और जो शोज मैंने रिजेक्ट किए तब जाके वो वेन्यू खाली मिला, तब तुम सेकंड चॉइस थे. लाइक या डोंट नीड टू, इतना उड़ने की जरूरत नहीं है. that's the vibe of this entire verse. I guess तुम और कोच के in the second hand check. मारा हमको थोड़ा टाइम है पर जान लेकी राइम निकम सोनू for this scene पर हम गाए. I already told you I loved this bar because of the Sonu Nigam thing, but the way it says Sunu for the scene पर हम गए तो फिर गए नहीं गम, but the way he has said it, the way his delivery is, you know what it sounds like. फिर गाए निगम बाय में जो खड़ी जैसे चाय में हो मारी वो तो सोनू for this scene पर हम गाए तो फिर गाए निगम बाय में जो खड़ी जैसे चाय में हो मारी वो तो. I love this चाय में मारी, और which is a very common thing that we have ना, वो हम डुबाते हैं चाय में और वो पिघल के नीचे गिर जाता है.
Perfect. I am the one आगे मत silly bun ये गाने करे रिलीज पर ना हो रहे मिलियन shout out मेरे दोस्त rapping where we really from दिल्ली से दिल्लीयान और मुंबई से विवियन This I did not understand. Delhi se Dillion and Mumbai se Vivian. I have no idea. मैं पीता डॉम पेरियन no diddy delhi This I know. 151 Ramotan got the belly on I know that because that's a champagne, I think, or it's a wine. But it's an alcohol. And Diddy wala मेरे को पता है Delhi on is a tequila because जो डिडी का जो भी केस अभी तो ट्रायल चालू है ऑनगोइंग है बट लास्ट ईयर जब ये पूरा इसका मामला फटा था सो लाइक डेली ऑन एक्चुअली कट टाइज ही हैड स्टेक इन दैट brand so they have cut ties with him last year. That's how I know because I had followed that news. 151 rum I'm guessing is another brand. सुनू Machiavelli songs Nelly मेरी Kelly कौन I like this also, Machiavelli, Tupac. Now थोड़ा बहुत तो मुझे भी ज्ञान आ गया है even though I don't listen to their songs explicitly. Nelly obviously another rapper. Kelly ये तो बहुत ही बड़ा मेन स्ट्रीम गाना था Nelly and Kelly का जो I love you and I need you. तो I'm guessing this is that reference. And उसके बाद क्या है करले श्रवण. Now छूले चरण is this a Shravan Kumar reference? I'm asking you, huh? I'm not guessing. I feel that करले श्रवण छूले चरण हाँ करले पैरी पौन तो I don't know. Tell you what I want what I really really want so This one, oh, Spice Girls. I tell you what I want, what I really really want. So many. That's why when I was listening to this for the first time, I'm like, the ending part of this has just so many things included. Oh, that was amazing. 51 Ramotan got the belly on सुनू Machiavelli songs Nelly मेरी Kelly कौन कर ले तू श्रवण छूले चरण कर ले पैरी पौन Tell you what I want what I really really want चाहिए Richard Millie watch no Drake but Millie walk पटेल की घड़ी रिचर्ड मिली अब तो मुझे तो ऐसा लग रहा है इन दिस मिक्स टेप ना मुझे सारे जो लग्जरी वॉचेस के ब्रांड्स हैं ना उनके नाम पता चल रहा है बिकॉज आई एम नॉट इनटू लग्जरी वॉचेस एंड ऑल बिकॉज कुछ लोगों को होता है बहुत शौक होता है आई एम गेसिंग कृष्णा इज ऑल्सो you know that guy who loves probably collecting luxury watches or buying luxury watches. But what I liked about this line is the Millie and Drake because there's this I mean we know Drake के साथ you know the whole Drake and Kendrick Lamar जो हुआ था and this is an allegation apparently that he is into minors and Millie Bobby Brown is also very very she thinks Drake is a very good friend of hers and they became close when she was a minor at that time so all of that there's just so many layers to all of these bars I am just it's insane then Patek ki I don't know what that want what I really really want चाहिए Richard Millie watch no Drake but Millie walk पटेल की घड़ी चौक में Patek ki घड़ी again I am guessing it's another watch brand चौक पे पहन के करूँ जॉग में डेफिनेटली another luxury watch brand पहन के करूँ जॉग में घाट को बरगल लड़का छात पे रखूँ शॉर्ट्स में Why just let me talk my shit जाऊँ जिधर भागेगी इधर they don't walk like yeah this Why just let me talk my shit मेरे स्पीकर फटते भीतर तक they knock like shit You learned in the yard they do so smooth that's just the switch was so freaking smooth अलग ही वाइब बन गया पूरे गाने का वाइब भी चेंज हो गया phenomenally done oh too good तुम गारंटी मुझसे करते क्यों ये नफरत वादे mad at me yeah दिल रखा दलेर खून मेहनती rookie season MVP why you mad at me I also like I don't know is it just me who's hearing this वो बोल रहा है ये दिल रखा दिलेर खून है मेहनती but also it kind of sounds like दिलेर मेहंदी I don't know if it's intentional या फिर मुझे ही ऐसा सुनाई दे रहा है You learned in the yard दे दूं गारंटी मुझसे करते क्यों ये नफरत वादे mad at me ये दिल रखा दलेर खून मेहनती rookie season MVP नफरत करते थे mad at me I don't know because maybe it's never enough हाँ चाहे जितना भी मेहनत कर लो Why you mad at me
सबको चाहिए मेरा सॉस बेबी हार्ड लक या लिरिक्स की है लंगर लगी लड़के कर रहे बॉटल I like this. बन गया Yes. बॉटल फिर खुल गया तो फिर बॉटम सब बगावत मेरा हक छीनू तब है मेरा वक्त and I'm back on my bullshit club. This kind of connects with the skit also. Like if you've got the rhyme schemes, if you've got this and that, you have to grind. That cannot be escaped. And if you think you belong at the top, go get it. It kind of connects really well with that skit. Skit, not really, it was part of the podcast, but it makes sense. अब मैं कुर्ते में फुल फिट माइक पे हूँ मुर्शिद भाई मेरी भूल चूक माफ मुझे हर साल ही करना था घोषित कि बेटा लीगी अलग है सीनी अलग है ये रैपर लगे स्वीट ये तो चीनी अलग है ये जो देश को बनाते वो हंसी की तरफ है देश को चला रहे उनकी स्पीच है गजब है कभी सुनना असली मजाक कौन सा चुनना कला बन गया मसाला कला असली मजाक कौन सा चुनना यस इम्पोर्टेंट कला बन गया कोई भुनना तभी सम फॉर द क्रिटिक्स क्राउड पैसा फेम ओनली टाइम This part is so good. ये जो देश को बनाते वो हंसी की तरफ है देश को चला रहे उनकी स्पीच है गजब है कभी सुनना असली मजाक कौन सा चुनना कला बन गया मसाला कलाकार को ही भुनना तभी सम फॉर द क्रिटिक्स क्राउड पैसा फेम ओनली टाइम I'm a backup is when I back my claim Yeah. ये लौंडे नहीं यार दे दूं गारंटी मुझसे करते क्यों ये नफरत वादे mad at me ये दिल रखा दलेर खून में all three verses are just amazing and I like दोनों लेवल एकदम एक ही लेवल पे है यशराज और कृष्णा इस गाने पे ऊपर नीचे कुछ नहीं जस्ट going at it completely like feels like such a wholesome and just such a synergetic collab amazing rookie season MVP why you mad at me ये लौंडे नहीं यार दे दूं गारंटी मुझसे करते क्यों also ये I नफरत वादे like I like Krishna's cadence here it's a little different I don't know his voice register is a little lower generally उनके generally गानों से इसमें थोड़ा सा lower है I don't know if kind of try to match यशराज's cadence here but I like it क्योंकि यशराज की भी आवाज़ थोड़ी सी भारी है कृष्णा की भी इसमें थोड़ी भारी लग रही है आवाज़ मुझे जनरली जैसा वो रैप करते हैं उससे थोड़ा डिफरेंट लग रहा है सुनने में mad at me ये दिल रखा दलेर खून मेहनती रूकी सीजन MVP why you mad at me डॉलर साइन करे ब्लेंड बेटा 10 देता स्टाइल में ये पेन लेता वेंडेटा स्टैंड लेता माइक पे जब वैम दे it's different definitely it's कोई भी बोलेगा इनका cadence अलग साउंड कर रहा है इस गाने में delivery it sounds very different देखा चैन ले बेटा 10 दलेर खून मेहनती रूकी सीजन MVP why you mad at me डॉलर साइन करे ब्लेंड बेटा 10 देता स्टाइल में ये पेन लेता वेंडेटा स्टैंड लेता माइक पे जब वैम देखा चैन लेता सैम लेता हाई पे और क्रैम पे ना कैमरे का डैम देता भाई देख देखे मैंने भी दिन जब हिम्मत थी सहने की पिछक करके मेहनत की दिन भर चलता है पेन अब भी ना सिंगर बनकर चले again ties back to the जो भी skit में बोला जा रहा था complete it's just amazing it's amazing मेरी इनसे and I like how the first one is a total flex the first verse second verse में दोनों अपनी legacy के बारे में अपने craft के बारे में अलग तरह से flex कर रहे हैं और बता रहे हैं कि भाई yes we are doing the grind so why you mad at me ना सहमति इन वर्ड्स में गहरी लेगेसी कला है मेरी थेरेपी एक पैर सड़क पे एक रहे नरक में झांक के तू झलक ले या आंख से तू परख ले हाँ शान से और सबर से ना मांग के और मदद से जिस ताज के लिए तड़पते वो कांटे से कवर थे हम ना कभी सेम मेरी नस्ल अलग बदली मैंने आके गेम मेरी हसल अलग जिस जमीन से मैं आया मेरी फसल अलग जो मेरे साइड मेरे भाई चाहे शक्ल अलग I love it ये लौंडे नहीं यार दे दूं गारंटी मुझसे करते क्यों ये नफरत वादे mad at me ये दिल रखा दलेर खून मेहनती रूकी सीजन MVP why you mad at me Fuck you, motherfuckers. Krishna the homie, yo. Amazing too good okay let me just go back wow that was amazing now I'm really excited because a lot like 5 songs 4 उसमें से collabs ही है so the next one is Hello which features Avicii let's see how the song is let's listen to this I hope Avicii has a Japanese verse I'm hoping that anyway Haji namaste okay ये जिंदगी खेलों में जीता तुम दानों में खेलों में जीता हाँ गहरों से दूर रहना शहरों में सीखा गहराई में तैरना इन लहरों पे सीखा जब भागने पे आई ये पैरों पे जीता मैरिड द गेम वो मेरी
मेरा सीना है लौंडे Okay. कमर पे असला हिप्स डोंट लाई या सारे शकीरा डॉलर साइन लगे लाजवाब बात से बात रखूं मैं ना करता आज हिसाब गाल पे हाथ पड़ेगा तो को ना मार तलाक बाहर तो आ मैं तो हारता नहीं बार को बार I'm back on that rap shit again लगे वो जाऊं can't capture a man लाई पूरी Oh, it has a little bit of Japanese influence if you hear in the background the instrumentals. That's cool. gang what you stacked up against slow dope लगे जैसे मैं amphetamine हाँ करिए down can't capture a man लाई पूरी gang what you stacked up against slow dope लगे जैसे मैं amphetamine हाँ करिए attack दने backpedaling ये बोले मेरा skin करे lack melanin but I got a dark side some like it again मुझ में ना Few कभी words कमी are ना missing. like with a pen इंडस्ट्री में चले धोखेबाजी रोके ना भी होंगे कभी लोग ये राजी रोज निभा रही ये लोग किरदारी परफॉर्मेंस जारी इनके शो के बाद भी लाइक वो देखे हैं मैंने भी लोग पर माना नहीं हार कटाना की धार पे करता हूँ शार्प में कलम की नोक Hello, hajime mashita. हेलो हाँ जी नमस्ते कर मुझे कॉल जब मनी इन्वॉल्व तो लाइन मेरी कॉल पे व्यस्त है Hello, hajime mashita. हेलो हाँ जी नमस्ते कर मुझे कॉल जब मनी इन्वॉल्व तो लाइन मेरी कॉल पे Hajime mashita. Hello, hajime namaste. Chisana shimaka lakite. Yeah, Big na it's collabo in Japanese. tase. Yo, Krishna-san, nagai tabi otsukaresan. Came to the baddest bitch in the town. We about to make that whole city bounce. Ego sticking my money. Obviously. Idiot told me feel वो वाली verse है नहीं, but I'll have to figure it out from somewhere what she's rapping. Okay. philosophy. Silky like Banarasi. Made a dream to hate Japanese. Now I'm in New Delhi. They call me Yo Awitch. We riding through alleys. He said, don't you worry. I'm the spiciest thing in here. Can you smell me? They cannot walk in my shoes 'cause my shoes are too heavy. Heavy like Soligo. They cannot let it go, let it go, let it from where they from anymore. Karemo, karemo, ore no toriko. Kimi no kokoro, give me now, give it all. Too many It has a lies little bit of and all English. in one truth. Funny and a karma, baby. That's the real proof. Hello, hajime mashita. हेलो हाँ जी नमस्ते Hello, हाँ जी कर मुझे नमस्ते। कॉल जब मनी इन्वॉल्व तो लाइन मेरी कॉल पे व्यस्त है Hello, hajime mashita. हेलो हाँ जी नमस्ते कर मुझे कॉल जब मनी इन्वॉल्व तो लाइन मेरी कॉल पे Hello, hajime mashita. हेलो हाँ जी Oh, this is Karan Kanchan, produced by him. He's also an amazing producer. Hello, hajime mashita. हेलो हाँ जी नमस्ते Oh, this was. Oh, it's over. This is short and sweet, huh? This is short and sweet. Let me see if I can figure out which is verse. Genius में होना चाहिए. Let me just see. Oh yes, Genius has the translations. तो जो Japanese वाले हैं, उनके translation दिए हुए हैं. जो English में है वो तो वही है, but couple of words that were missing also are here. तो I married the game. वो मेरी हसीना है. Like okay, hips don't lie. ये सारे शकीरा है. We know that's Shakira's song. Then डॉलर साइन लगे लाजवाब बात से बात रखो मैं ना करता आज हिसाब गाल पर हाथ पड़े गधों को ना मारता लात अमेजिंग बाहर तो मैं तो हारता नहीं बार ऑफ बार हाँ आई एम बैक ऑन द ट्रैप शिट अगेन लगे वॉर जोन कांट कैप्चर द मैन लाइक पूरी गैंग व्हाट यू स्टैक्ड अप अगेंस्ट फ्लो डोप हाँ ये वाले कुछ एम्फेटामीन which is probably a drug. Let me just see. Fluodope means his rap delivery is high quality addictive like methamphetamine. Oh, it's meth. Okay, got it. That's why it's addictive. Then career attack, they backpedaling. Ye bole mere skin color lacks melanin, but I got the dark side. I like that. Like Anakin, Skywalker from Star Wars. Who turns into obviously Darth Vader. Got it. Oh, that was cool. That's a cool bar. I like that. मुझे ना कमी कभी I don't like with the pen. इंडस्ट्री में चले धोखेबाजी रोके ना भी होंगे कभी ये लोग राजी रोज निभा रहे लोग किरदार ही It's like a show. सामने से कुछ और पीछे से कुछ और परफॉर्मेंस जारी इनकी शो के बाद भी I like that last line also. कटाना की धार पे करता हूँ शार्प मैं कलम की नोक वाह ओके लेट्स सी एक बार अवेच का जो जापानीज में जो वर्सेस है कुछ दिया हुआ है सो द सेकंड लाइन दैट शी सिंग्स आफ्टर हांजी नमस्ते दैट सेज दैट इट्स अ रेफरेंस टू अवेच's origins came from a small island as she hails from Okinawa, Japan. Okay. Then she says big na korabo tesi roughly translates to achieve the big collaboration. Okay. Yo Krishna roughly translates to good job on the long journey.
All right. Okay, she's acknowledging Krishna's journey basically. Okay, interesting. Let go of the ego and be carefree. India taught me philosophy. Silky like Banarasi. Mera juta hai chapaniya. Now I'm in Delhi. They call me Yo Avij. We're riding through the alleys. He said, "Don't you worry. I'm the spiciest thing here. Can you smell me?" They cannot walk in my shit because my shoes are too heavy. Heavy like Solijo. They cannot let it go. Let it go. Let it flow. Win it from any more. And then there is Dore me karamo oro no toriko. Translates to everyone is captivated by me. Then there's another Japanese word. Kimi no kokoro, give me that. Okay, give me that, give me now. Too many lies and only one truth. Find it in the karma, baby. That's the real proof. That's nice. This is a very sweet, short and sweet collaboration. All right. So I think again, lyrics pretty much direct and we know what they mean by it. I think even though it's like a short song, it's less than 3 minutes, 2.5 minutes का है, but still I think it was groovy, it was fun. मुझे मैं जब part 2 record किया था मैंने बोला था कि I don't know side B शायद उसका totally उसका vibe अलग हो, but no, I think all the songs are supposed to be groovy. They're meant to be that. So I'm happy with that vibe. I don't mind all the songs if they are groovy. I mean, why not? Let's have a mixtape जहाँ पे हम सारे गानों पे groove कर रहे हैं. Anyway, so the next song I'm going to be listening to is Vibrate. This is featuring Bacha. Let's listen to this. Okay, this is Phenom again. Okay, that's cool. So are you saying that Krishna won't get his props till he gets his Beyonce? No. Oh! Phenom to Don. $sign one time. बोलूं मेरा स्टाइल चेक करनी है बातें फिर डायरेक्ट कर. Okay, this is the something I was absolutely not expecting. This vibe. हिंदी मेरी भाषा है वैसे पैसा मेरा डायलेक्ट पर फ्लाई लगूं मैं ना पायलट पर नंबर है तेरा डोंट डायलेक्ट पर Okay. फोन रहता मेरा साइलेंट पर गाना कीप इट लो की रखता वाइब्रेट पर. Oh, that's बोलूं why. से मेरी वाइब्रेट कर 1 से 10 I know you like it girl. Brown skin जैसे island girl. Private jet to an island girl. Run by it's you and I. If it's us then it's do or die. Double R करे तू arrive. दरवाजे मेरे suicide. तू ले रही मेरा इम्तिहान क्यों लगे जैसे तेरे बिन हैरान हूँ. मिले हम भी इत्मीनान से फिर जाने की तू जिद में आज क्यों. तू भी कभी आके देख मोहल्ले इलाके में बातें करूँ आँखों से क्योंकि झूठ नहीं बोलती है आँखें. ये बोलूं मेरा स्टाइल चेक करनी है बातें फिर डायरेक्ट कर. हिंदी मेरी भाषा है वैसे पैसा मेरा डायलेक्ट पर फ्लाई लगूं मैं ना पायलट पर नंबर है तेरा डोंट डायलेक्ट पर फोन रहता मेरा साइलेंट पर गाना कीप इट लो की रखता वाइब्रेट पर. Life or trouble on a private heavyweight in the game on the lightweight 2 घंटे में change करे What is going on? से लगी है let me hide with you जब करे baby चारे yeah मेरी आंखें हुई dilate yeah इन कपड़ों में लगे तू समुंदरी खजाना और लौंडे पूरे पाए. Oh my God, मेरा style these lyrics. check Birkin crocodile check Tiffany blue dial check scene बनाने जैसे director you so fine you so physically fit $sign cause we lyrically lit. Yeah. बाकी लौंडे typically shit that boy on the track typically hit. बोलूं मेरा स्टाइल चेक करनी है बातें फिर डायरेक्ट कर. हिंदी मेरी भाषा है वैसे पैसा मेरा डायलेक्ट पर. This mixtape is so much fun, guys. नंबर है तेरा डोंट डायलेक्ट पर फोन रहता मेरा साइलेंट पर गाना कीप इट लो की रखता वाइब्रेट पर. कीप इट लो की yeah you know me करूँ रोल like a soul या फिर OG. उसे प्यार चाहिए यार चाहिए दोस्ती no please चाहिए निकल रोल मुझे क्योंकि shake that bumper कमा तनखा how you doing feeling great जैसे संपा पीरा रमता shot no jumper I ain't calling even if I got your number. Keep it low key yeah you know me करूँ रोल like a soul या फिर OG. उसे प्यार चाहिए यार चाहिए दोस्ती no please चाहिए निकल रोल मुझे क्योंकि shake that bumper कमा तनखा how you doing feeling great जैसे संपा पीरा रमता shot no jumper I ain't calling even if I got your number. बोलूं मेरा स्टाइल चेक करनी है बातें फिर डायरेक्ट कर. हिंदी मेरी भाषा है वैसे पैसा मेरा डायलेक्ट पर फ्लाई लगूं मैं ना पायलट पर नंबर है तेरा डोंट डायलेक्ट पर फोन रहता मेरा साइलेंट पर गाना कीप इट Did not expect this. Guys, I'm a little speechless and in a good way because I mean I don't know, I was not expecting this and I just love the fact that this mixtape is really really fun.
मुझे बहुत मजा आ रहा है सुनने में. Like I am just vibing. एक के बाद एक गाना, the moment the next song plays, the vibe changes, but I'm grooving, I'm having fun, I'm engaged with the song. There's something, I see a different side of Krishna. You know, there's a difference between in his cadence a little bit. कभी उनकी flows switches इतनी अच्छी लगती है, कभी बिल्कुल ही आराम, मतलब इतना अच्छा फ्लेक्स करते हैं, कभी ऐसे चिल वाइब में आ जाते हैं. इट्स जस्ट दिस होल रोलर कोस्टर राइड विद दिस मिक्सटेप एंड आई एम लविंग इट. आई एम एब्सोल्युटली लविंग इट. आई एम कंप्लीटली ग्रूविंग टू दिस. फिनम अगेन डिड अ फैबुलस जॉब. ऑल प्रोड्यूसर्स, मैं बता रही हूँ, सारे प्रोड्यूसर्स ने जो ताबड़तोड़ काम किया है ना एक एक गाने के साथ. अभी तो 2 गाने और बचे हैं, बट जिस तरह से सारे प्रोड्यूसर्स ने, मतलब ऐसा लग रहा था कि कृष्णा ने बोला कि भाई मैं तुम लोगों पे ना कंपटीशन लगा रहा हूँ एंड विनर को मिलेगा व्हाटएवर XYZ, एंड दे आर लाइक, सो ही वाज लाइक probably, you know, bring your best game forward, I'm gonna see who produces the best track. Honestly ऐसा लग रहा है, it's feeling like they are out for this prize that Krishna has given, like he's promised to these producers कि भाई तुम सबसे बढ़िया गाना बनाओगे अगर मेरे मिक्सटेप का, तुमको ये प्राइज मिलेगा. Because they are just completely killing it with each and every song. Each and every song, I'm thoroughly enjoying it. I feel that yes, Krishna ki mixtape we have to appreciate the way, you know, he's showing his versatility and all of that. But I really want to. मैंने part 2 में भी अलग से producers को, सारे producers को shout out दिया था. But again, I want to say that the producers are just absolutely, they are the MVP of this whole mixtape. They are the MVPs. Just once more. A very chill song. Love the vibe. It's like, you don't have to take the song seriously. Guys, you just have to vibe to the song. You don't have to take the song. You don't have to take the lyrics that seriously. It's just there. It's to groove. It's to vibe. थोड़े से sexy lyrics है, you know, थोड़े से suggestive lyrics है. Just chill. Just get into the mood and just groove to the song. That's the whole point of the song. अगर कोई और पॉइंट है इस गाने का तो प्लीज मुझे बता दीजिए. मुझे तो नहीं लगता कोई और पॉइंट है इस गाने का. यही पॉइंट है इस गाने का कि आपको बस सुनना है और एंजॉय करना है इस गाने को. सो एंड आई मीन जैसे गाना स्टार्ट हुआ ना, आई न्यू कि बादशाह की कैसी केडेंस होने वाली, और वही मुझे मिला. अभी मैंने लास्ट उनका जो गाना ये किया था, रिएक्शन दिया था, गलियों के गालिब, यू नो, ही हैज अ सर्टेन स्टाइल एंड सेंस एंड आई, it's fine, I love that. And वो एक commercial vibe जो उनका है, that whole persona that he has, right? He makes commercial bangers, we all know that. So I knew कि बादशाह का verse आने से पहले I knew कि how is he going to sound, and he's sounding exactly how I imagined it. And but Krishna was like, he took me by surprise here. So yeah, good song, I enjoyed it. So अब अगले गाने पे जाते हैं. ये लोगों मैं back कर रही हूँ. Who You Are featuring H. इसमें है 2 प्रोड्यूसर्स, फेनम ने ये प्रोड्यूस किया है एंड लेजा. ओके, लेट्स लिसन टू दिस. लिरिक्स हैं, वेयर इज 3am. अच्छा, यहाँ पे कोई और है. मैं आया करने तापमान गरम, बात मान तू. इसमें हिंदी में है लिखे हुए. सॉरी. तापमान गरम, बात मान तू नादान रह, सावधान कलम लगा लो जाके आप जान, तुम नाकाम नरम, इनके साथ आर्ट. क्या बोला मैंने? प्रोड्यूसर्स ने तो जो कमाल किया है इस एल्बम में, मिक्सटेप में, मेरे पास शब्द नहीं है अब बोलने के. बार मैं बोल रही हूँ, बट आई हैव टू कीप रिपीटिंग बिकॉज I want to ensure that this point comes across very strongly, that I am loving the work that the producers did for this mixtape. चलूं 4-5 कदम में, मैं हूँ थोड़ा सनकी जैसे ODB, smoking these rappers जैसे ये OCB, GBHAOTW तो OPD, कमाई होती मोटी तो CA रोजी ले OTP, जो भी कह रहे फैन होंगे वो भी मेरे स्टाइल.
I need to know this OCB GA. Okay, I'm gonna figure it out later. इनका जन्म आजा बेटा गोदी मेरे इन्हें लगा मेरे जाने में अब थोड़ी देर है पर हम स्टिल ओवर है जैसे सर पे टोपी मेरे गर्दन आई सी जुलाई में इनकी गाड़ी का दाम मेरी कलाई पे खोले जानी तू का What is this obsession with watches? What is this obsession in this mixtape with the watches, guys? Huh? Please tell me. सुनाई दे मान जानी तू माइक पे खानदानी लुगाई है चाहे मिले मुझे फाइट मिले जंग नाम मेरा छाया इनकी हाइप बिके कम बोली लेट आया सॉरी आई शुड रन रोली शाइन करे ज्यादा मुझे टाइम दिखे कम Anywhere that we go to yeah जानते हैं हमें when we roll through yeah सुना शहर में भी तेरे they don't know you हाँ तो बोल तू है कौन I don't know who you are Anywhere that we go to yeah जानते हैं हमें when we roll through yeah सुना शहर में भी तेरे they don't know you हाँ तो बोल तू है कौन I don't know who you are My young gunner, I'm through a stick in the bush. Gotta be a real stepper trying to kick it with us. Every 365 I make a ticket or plus. Get your money up, stop wondering what whip that push. What is a May busy GLS 600 bizens. Fill it up with ladies, tell the ladies bring your frizzens. Numbers don't lie, Shelly only fuck with tizzens. I can't see a hater through this car, yeah, Lizens. Tizzy with a Lizzie, free my brothers in the pizzens. Came a long way, I was bizagging up the bizens. M4 Lizzie, free my brothers in the pizzens. Came a long way, I was bizagging up the bizens. M40 soldier, fuck a pussy boy and his ends. My bro, they bring them up and give your block a fucking clizzens. Chain different colour stones, Balamori with the watches, I got different colour homes. Two-tone white, stainless, platinum or the rose. Had to let these rappers know that I'm back up on the throne. Okay. Where is he from? H. जानते हैं हमें when we roll through yeah सुना शहर में भी तेरे they don't know you हाँ तो बोल तू है कौन I don't know who you are Anywhere that we go to yeah जानते हैं हमें when we roll through yeah सुना शहर में भी तेरे they don't know you हाँ तो बोल तू है कौन Oh, Harrison James Strong, British. Why does his photo seems familiar? H. इससे पहले भी कोलैब किया है क्या? याद नहीं आ रहा मेरे को. इसकी फोटो मुझे जानी पहचानी लग रही है एच की. Has he collabed before with Krishna? I don't remember, but I don't know why I find his photo familiar for some reason. Anyway, this whole what is happening with this album and this, it's such a fun vibe. I think Krishna decided कि अरे यार बस मजा करना है, मस्ती करनी है, फ्लेक्स करना है, अपनी घड़ियों के बारे में बात करनी है. The obsession with luxury watches in this mixtape is unreal, guys. It's unreal. Also, again, in this song, he is kind of flexing about his talent and his prowess. Can somebody just tell me what is the OCB and the GBHTW thing? So, I mean, I don't know. When I don't know, I don't know. So, if somebody can clarify that in the comments, that'll be great. But okay, so two international collabs and he's just no promotion, no nothing. He's like, yeah, ye hai collab. Because I did not see anywhere that, oh yes, Krishna's mixtape will have so many collabs, and yes, there would be international collabs as well. Because generally people promote it. Generally लोग काफ़ी promote करते हैं इस चीज़ को. Because जब दो artists साथ में आते हैं, उनकी भी audience, there's always this mix of audience that you get. Because अगर उस artist के भी कोई listeners है, वो कृष्णा को पहली बार सुनेंगे, हम कृष्णा को सुनते हैं तो उन आर्टिस्ट को हम जाके सुनेंगे. So it's always a great thing when a collab happens, because you get to, if you have not listened to the other artist who's part of the collab, then you are exposed to that artist's kind of talent in that one song, and it might pique your interest कि अच्छा चलो इनको मैं इनके गाने check out करता हूँ. But Krishna just casually, it's like हाँ चलो सुन लेंगे ये लोग, सुन लेंगे, हो जाएगा. I have done international collabs, I don't need to promote it. That's the confidence that he has on his art and his talent, which has been multiple times expressed in this particular mixtape as well. But I feel just mood and vibe wise, the whole mixtape is just fun. It's fun, and something that Krishna said that I want
my listeners to just enjoy and have a great time listening to this. I don't want them to think too much about it. This of course is, there are emotional moments, जैसे Never Enough हुआ, वहाँ पे मैंने बोला था जब मैंने react किया था कि there's a little bit of pain inside that. Sorry. The first song as well. So वो exceptions है, वो हर प्रोजेक्ट में रहते हैं, बट ओवरऑल द थीम इज प्रीटी कंसिस्टेंट थ्रू आउट. अगर यहाँ पे भी अगर आप वर्सेस देखोगे, मैं आया करने तापमान गरम, बात मान तू नादान, रह सावधान कलम, एंड लाइक he knows that he has arrived now after quite a gap with a project. Yeah, everybody brace themselves because yeah, I'm gonna be dropping it hot, like amazing. And it's so true. ऐसा नहीं है कि मुझे तो I don't know, see, मेरा तो उतना हिप हॉप का knowledge, I'm a very recent hip hop listener, right? There have been people who have been probably listening to hip hop since years and years and years. So who am I to say, oh, this is a song which is not up to the standard that I was expecting? हो सकते हैं बहुत लोग जो supposedly आप 10 साल से हिप हॉप सुन रहे हो, आपकी तो obviously knowledge is going to be very very different than someone who has just started listening. मेरे को क्या 5 साल भी नहीं हुआ है, probably ये 5वां साल होगा from listening to hip hop. So I'm saying my taste is very different than somebody who has been actively listening to hip hop since say childhood, since a decade, right? But in my this many years of listening as well, I don't think anyone can say that, oh, in this mixtape कोई भी song quote unquote mid है, जो जनरली ये टर्म यूज होता है, राइट? मुझे तो नहीं लगता because every song is just giving a very very different flavor and is just fun to listen to. So yeah, those are just my 2 cents. Anyway, उसके बाद to be honest, we smoke in these rappers जैसे OCB. Now what is that? I don't know. And again वो GBH, तो वो आप मेरे को बता देना, जो भी कह रहे फैन होंगे वो भी मेरे. स्टाइल इनका जन्मा, आजा बेटा गोदी में मेरे. इन्हें लगा मेरे जाने में अब थोड़ी देर है, but I'm still over here, जैसे सर पे टोपी मेरे. Then so yeah, it's like I'm here. If you are being complacent thinking कि अरे कृष्णा का तो एरा खत्म हो गया, आया गया types, it's no. I am the kind of person who is going to brave any storm. And Krishna is that kind of person for sure. He has been in the game for so freaking long. Yeah, I don't think he's the kind of guy who gets deterred by anything. मतलब इतना देख लिया, इतना झेल लिया है, इतना सुन भी लिया है, इतना प्यार भी मिला है. So I think he has experienced all kind of emotions. And Krishna के जो भी interviews मैंने देखे हैं ना, it seems to me, I don't know him obviously, I've never interacted with him, but I feel that it seems to me he's a very calm and very collected person. I mean, जो भी उनको मचाना पड़ता है ना तबाही, वो लिख के ही करते हैं वो. So that's, but I think nature wise it's like very zen, calm, cool down person. That's my assessment actually, but it could be very different. Yeah, anyway, that we go, जानते हैं हमें when we roll through, सुना शहर में तेरे, they don't know you, तू बोल तू कौन है, who are you? They don't know you, who are you? And I'm pretty sure he doesn't care. What else? Also, yeah, like I said, the obsession with watches is unreal in this whole mixtape. So we're gonna go to the last song, which is called Your Truly. This is produced by Bharg, and now I don't know, अब जैसे पहला गाना था Nothing to Prove, that was a little different from all the other songs in terms of the emotion, and this is the last track, so I don't know if it's going to be like a fun vibe or a serious vibe. Let's see. You'll never leave, you'll never leave, you'll never leave me lonely. Oh god, comment ढूंढ रही थी. You'll never leave, you'll never leave me lonely. You'll never leave me lonely, okay? Dear Prospect, I hope this letter finds you well. कैसे हैं घर पे? Oh, this is going to be emotional. This is going to be an emotional one. He is addressing Prospect. Come on. अब और कैसे हैं तेरे friends? I know you're feeling grown, तू हुआ अभी 18 और नया तू अभी कॉलेज जा रहा है. I know that feeling जो है अंदर तेरे, but you're insecure, emotions रखता अंदर तेरे. दुनिया का मजाक बनाता तू and I can tell. It's just to cover up the fact that you don't like yourself.
मैं बस कहना चाहता तुझको इस Oh my god, I'm not ready for this. Am I ready for this? क्या यार? Okay, let's start थोड़ा सा पीछे जाके. हाँ, just reminded me of I don't know why Dear आदित्य बादशाह का जो गाना था, वो भी अपने younger self को लिख रहा था. ये अपने I mean not first stage name you can say when he came to the industry with this name. So kind of writing to his younger self only, right? So Dear Prospect, I hope this letter finds you well. कैसे हैं घर पे सब और कैसे हैं तेरे friends? I know you're feeling grown, तू हुआ अभी 18 और नया नया तू अभी कॉलेज है जा रहा है. I know that feeling जो है अंदर तेरे, but you're insecure, emotions रखता अंदर तेरे. दुनिया का मजाक बनाता तू and I could sell. It's just to cover up the fact that you don't like yourself. मैं बस कहना चाहता तुझको it's okay bro. It's okay to feel things जो समझ ना पाए ये लोग. ये तेरे जिंदगी के best years. बनाएगा नए दोस्त and you'll have the best peers. So ज़ाया मत कर टाइम अपना, no days off. और भूलना मत तू grind अपना, it pays off. अपनी तारीफ सुन के होता है तू खुश आजकल. Cause girls compliment you for your looks आजकल. और छोड़ दी तूने पढ़नी अपनी बुक्स आजकल. और ये सस्ती विस्की छुपा रही है दुख आजकल. I know I see that you are growing up, but trust me young prospect you don't know enough. तेरे सपने थोड़े अलग and I know it's tough. Stop dreaming about rap, तुझे बोले सब. मैं बोलना चाहता तुझको मत कर doubt तू. You are good enough to do whatever you set out to. आगे जाके मिलेगी setbacks और कठिनाई, पर अपने आप को होने मत देना उन चीजों से define. और हाँ गलतियां होंगी but you get better every time. yeah, Don't always need to hide and pretend that you were fine. तू अभी full of life and that's all you need to shine. मुझको दिखती तेरी आंखों में एक चमक when you smile. I envy you, so take care and stay strong. और याद रख मैं तेरे साथ हूँ, you never be on your own. the verse starts from Dear Krishna. Dear Krishna, तेरे कैसे हैं हाल? मेरी पिछली चिट्ठी भेजे हो गए almost 10 साल. It's been a while, तू होने वाला अब 28. And I know this probably feels like it's the lowest point of your life. I sense तुझसे आ रही अब एक negative vibe. And you said depression often makes you think of suicide. But fuck that, ऐसी सोच नहीं थी तेरी कभी. I know it feels like बारी नहीं आती तेरी कभी. मैं बोलना चाहता तुझको hold on. हार मत तू, हिम्मत तेरा will हमेशा so strong. तू अब क्यों छोड़ना चाहता अपने सपने अधूरे? I know you've had your ups and downs, पर कर तू उनको जाके पूरे. तुझ पे प्रेशर कमाने का and music isn't working. और अब तू ढूंढ रहा दूसरी चीजें just to make an earning. I know तुझको लगता है embarrassing कि तू एक टाइम साइन था, now you're just about managing. I noticed तूने छोड़ दिया लोगों को बोलना you rap, क्योंकि तुझको लगता तू बस एक failure at that. Tell me brother, where's the confidence you had? कितने टाइम तू बैठा रहेगा just feeling so sad? Cause last time हमने बात करी तो तू था full of life, and now I don't even see it, that spark in your eyes. Yeah, Let me tell you, आगे जाके चीजें बदलेंगी और एक दिन ये लोग कदर करेंगे तेरे सपने की. इसलिए छोड़ मत तू गाने लिखना. Believe me, you're destined for bigger things in life, Krishna. आजकल I know you're feeling like this life is hell, but chill out. You should never be so hard on yourself. You should always treat yourself well. और बुरी चीज नहीं है when you're down to go and ask for some help. yeah. मैंने सोचा तुझको लिखूंगा ये चिट्ठी आज और बोलूं बुझने मत दे तू ये हल्की मिटती आँच. तुझे जाना अभी दूर, so don't burn out. And trust me, one day life will finally work out. I hope तू ढूंढे ताकत to carry on this time. Signing off, yours truly, $. Forever yours. This is the outro.
I'll talk about the song, but let me just finish with skit 4. That there was Krishna with an undisputed banger, I'd say. This is episode number 15 of the Voice of the People show. Totally. We're putting it down with the man, Mr. Uncle. Straight up, Mr. Bobcat right here. We're about to sign now. Telling y'all, please listen to it again and again and pass it on to your friends, because this shit is so dope. Alright, let me stop this. I mean, you can't help but feel something deep inside when you listen to yours truly. I think this was just so perfect. This is how you curate a project. Because you see so many facets of an artist, and this song has just brought everything together so well कि yes, मैंने अचीव किया इतना, मैंने इतना फ्लेक्स किया, मैंने अपने ऑप्स को भी डिस कर दिया, फन, आई टुक अ स्टैंड फॉर वो जो सेंसिटिव गाना था फॉर अ पर्सन समय के लिए, एंड एवरीथिंग, like every goddamn thing. And then it all comes down to this. The whole point of the song is that he never stopped. He kept going. And when he started as Prospect, obviously when you're young, you're full of fire. Yes, you can do it, this and that. वो एक अलग phase होता है. But when you grow up and you come into your 20s, and especially late 20s, 25 plus, and जो 25 से 30 वाला जो time होता है ना, it's the most rewarding as well as the most confusing, because you gain that maturity of what you want to do, but you also get bogged down by so much of societal pressure that there is a certain expectation that people or the society or your family, they have from you, and when you're not able to fulfill them, it kind of really dims the light inside from you. It starts dimming, and then या तो आप उसमें सकम कर जाते हो, या तो you move past that and you're like, no, I'm not gonna give up. So and then in the later fag end of your life, या फिर अगर आपने उसको क्रॉस कर लिया उस hurdle को, and you then achieve your goals, you are like, it was so worth it. Otherwise you are filled with regret. So I think this song overall is a very, very big motivator in terms of not giving up, in terms of that this is a reality check. This is a reality check because he is talking about so many things in terms of first, how confident were you in, especially the second verse, which is कि जब वो कृष्णा को लेटर लिख रहा है, जब वो 28 के है specifically, that you know, you feel that you're suicidal, you're depressed, this and that, but then he never stopped. He's like, no, I'm not gonna succumb to this. It's not gonna happen. And he did not, and look where he is right now today. So it's a very, very big motivation for a lot of people, especially, you know, hardcore fans of Krishna, जो उनको बहुत regularly सुनते हैं and उन्हें as a role model देखते हैं. This is important because this is a reality check that no matter where a top artist is, it is never going to happen from shortcuts. It is never going to happen. Guys, you have that hustle, that grind has to be there. And a lot of people also say, see, that एक दूसरा एस्पेक्ट इसका ये भी होता है कि लोग बोलते हैं कि लोगों ने ना हसल कल्चर को बहुत ज़्यादा रोमांटिसाइज कर दिया है कि यू नो हसल करो, बट इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. लोग बोलते हैं कि नहीं, इसमें इंसान की मेंटल जो हेल्थ होती है वो बहुत इफेक्ट होती है ग्राइंड करने पे, उतना प्रेशर काम करने में, उतना स्ट्रेस लेने पे, विच इज़ ऑल्सो अ वेरी वेरी वैलिड पॉइंट. आई एम नॉट invalidating that point. होता ही है, and nobody is romanticizing that hustle culture. Point is कि there are people who are lucky enough कि उनको platter पे सब कुछ मिल जाता है, but platter पे मिलने के बाद भी अगर आप उसको appreciate नहीं करोगे तो वो निकल जाएगा आपके हाथ से. Otherwise, I mean, if you have been given that talent, that platform, then make use of it. I mean, don't just look for shortcut ways to get what your goal is, because जितने shortcuts और तेजी से वो आएगा उतनी तेजी से शायद निकल भी सकता है. So that mentality of
no matter what happens, I am not going to give up is very very difficult to maintain. और जो लोग कर लेते हैं वो लोग कर लेते हैं. I think for me also this was a very good reminder to constantly keep learning and to constantly ensure that आप मेहनत करते रहो. Because I feel that music, that's why I feel music can be such a good motivator. कि हाँ, हम म्यूज़िक अपने स्ट्रेस रिलीफ के लिए सुनते हैं, हम वर्कआउट करते हैं म्यूज़िक सुनते हैं, हम पढ़ाई करते हैं म्यूज़िक सुनते हैं, हमको डिस्ट्रेस करना होता है म्यूज़िक सुनते हैं, हमें चिल करना होता है म्यूज़िक इज़ एवरीवेयर अराउंड अस. एंड आई फील दैट सॉन्ग्स लाइक दिस just make so much of an impact and so much of a difference. I loved it. This whole project is absolutely amazing. Congratulations to Krishna. The wait was so much worth it, guys. The wait was so much worth it that I don't know. I have no words. This was so enjoyable. जितने भी गाने सुने, not a single song is bad. Not a single song is. देखो, favorites आपके होंगे, but point is कि not a single song lacks anything मेरे हिसाब से. अब जो बहुत ही इंटीग्रेट म्यूजिक लवर्स है, जिनको म्यूजिक की बहुत ज़्यादा नॉलेज है, who know, they can obviously judge in different parameters, but I am a novice listener. I am not a music expert. तो मेरे लिए when I listen to a song and when I listen to a project, I am seeing from a perspective कि यार एक आम आदमी को कैसा लगेगा सुनने में. So मेरा वो perspective होता है. And जो प्रॉपरली जिनको म्यूजिक की नॉलेज है, ऑब्वियसली वो और अच्छे से ब्रेक डाउन कर सकते हैं. देयर इज नो डाउट अबाउट दैट. बट फॉर मी नन ऑफ द सॉन्ग्स आर पुअरली एग्जीक्यूटेड. दे आर all so well done. It's been a pleasure listening to this entire mixtape, and like I said, the wait was completely worth it. So mere to I don't know like what to pick because all the songs are so good, but I definitely would want to pick Guarantee and yours truly to hai hi hai. Like my top 3, okay, top 3 is very difficult to pick, I think, depending on your mood, but I would say Guarantee, yours truly, these are not in any specific order. Guarantee, yours truly, and Never Enough for sure, Sensitive. I think these would be the songs. Even Knock Knock, no, I don't know. It was fun song. All the songs are really fun, but हाँ, आज जो मैंने सुना, Guarantee and yours truly, some completely stood out for me, both the songs. So yes, that concludes the listening of this entire mixtape, yours truly by Krishna. You guys can give me your top 3, your top 5, and definitely I'm sure yours truly सुन के तो काफी कुछ feel किया होगा. I would love to know that in the comments. So yes, that was the reaction. That was the album or the mixtape listening. I'm gonna sign off now and I will see you soon now on my next video. Bye.